तो आज हम लोगों ने देखा कि बच्चों ने कितना ही खराब ढंग से सुनाया है ना। तो ये कोशिश है और इसमें बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है और जो भी डेफिनेशन सुनाया वो बहुत ही घटिया किस्म का है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यही बच्चे आने वाले समय में एक दिन बहुत अच्छा करेंगे। जहां एक दिन ये लोग माइक पकड़ने से डरते थे और सुनाने से डरते थे, ये छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 9th के हैं एक दिन अपने आप को बहुत बेहतर करेंगे। और मैं बच्चे लोगों से कहना चाहूंगा कि डरो मत, आपका जनरेटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने दीजिए, क्योंकि इसीलिए कर रहे हैं कि आपके अंदर का डर खत्म होगा। अगर आपको निखरना है, कल भविष्य में निखरना है, तो आज बिखरना ही पड़ेगा। अपने आप को बिखेर दीजिए पढ़ाई के मामले में, तभी जाके कल आप निखरिएगा। अगर आप ये हौसला रखते हैं और ये सपना देखते हैं कि सूरज की तरह मैं चमकूं, तो आपको आज से ही कोशिश करना होगा सूरज की तरह जलने के लिए। क्योंकि सूरज अगर चमकता है तो वो जलता भी बहुत है। अगर सोना चमकता है तो उससे पहले उसे आग में तपना पड़ता है। इसलिए अगर आप अपने आप को चमकाना चाहते हैं, लाइफ में हौसला रखते हैं, ये आपका अंदर इच्छा है कि मैं भी जीवन में कुछ करूं और आगे बढ़ूं, तो इसके लिए बहुत चोट खानी पड़ेगी, बहुत जिल्लत झेलनी पड़ेगी और बेइज्जती को सहना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सफलता का, कामयाबी का जो रास्ता है वो कांटों से भरा हुआ है। कोई मखमल और सोफा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि रास्ते में सब चीज आसान हो जाएगा, तो नहीं, एक के बाद एक परेशानी आगे आती रहेगी और इन परेशानी को सामना करना होगा। और इसको लड़ के जो आगे बढ़ता है वही ऊंचाई तक जाता है। इसलिए सारे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि कोशिश करो। सबसे बड़ा रोग की क्या कहेंगे लोग, हम हमेशा सोचते रहते हैं हमसे गलती हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, दूसरे बच्चे क्या सोचेंगे। ये सारे बातों को साइड कर दीजिए और सिर्फ आप अपने बारे में सोचिए। दूसरा क्या सोचता है ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है। और आज ही समय है अपने आप को मजबूत बनाने का, क्योंकि आज नहीं तो कभी नहीं मजबूत बना पाएंगे। जो बच्चे कहेंगे कल, उनके दिन गए ढल। जो कहेंगे परसों, उनको लग जाएंगे बरसों। और जो बच्चा कहेगा आज, वही करेगा राज। इसलिए आज नहीं तो कभी नहीं, और लगे रहिए और अपने आप को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। समझे? My name is Saurabh Gupta. Noun is a naming what is names a person, place, animal or thing. Pronoun. Alternative of noun is called pronoun. Verb is an action word. Adjective. Describing what is called an adjective. Sentence. A group of words that make complete sense is called sentence. Antonym. Opposite meaning is called antonym. Synonym. Same meaning is called synonym. चलो ठीक है, बहुत अच्छा, कितना अच्छा सुनाया। Good morning, all of you, sir. My name is Sonu Kumar. What is noun? Naming is called a noun. Pronoun. Alternative of is called a pronoun. Verb. Action word is called a verb. Synonym. Same meaning is called a synonym. Thank you. कौन से चैनल है? चलो बोलना। What is noun? Noun meaning is called a noun. What is pronoun? Action verb. Alternative word is called a pronoun. Alternative of noun is called a pronoun. Verb. Action verb is called a verb. Adjective. Describing meaning is describing meaning. Word is called a adjective. Sentence. A group of words that makes complete sentence. Complete sentence is called a sentence. Antonym. Same meaning is called a antonym. Synonym. कैसे होगा पढ़ाई? खाली झूठ मूठ का लंबा हो रहे हैं। कैसे काम चलेगा बाबू? ऐसे पढ़ाई होगा। एक भी डेफिनेशन आपने अभी तक सही नहीं बोला है, टोटल रॉन्ग बोला है। नहीं आता है ना? चलिए मान गए कि आप नहीं आता। सोचिए कैसे पढ़ना है सो आप लोगों को।
एक एक अक्षर का डेफिनेशन नहीं याद कर पाते हैं। Myself, Amrit Sadruddin. What is noun? Noun is a naming word. Naming word is called noun, pronoun. Adjective of noun is called pronoun. Verb, action word is called verb. Adjective, describing word is called adjective. Sentence, the group of words that is complete sense is called sentence. Antonyms, opposite meaning of word is called antonym. Synonym, same meaning of word is called synonym. चलो कुछ हद तक सुनाया है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गलती है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट। Good morning, all of you. My name is Darshana. Noun. Naming word is called noun. Pronoun. Alternative of noun is called a pronoun. Word. Action word is called a verb. Adjective. Describing word is called an adjective. Sentence. A group of words that make a complete sense is called sentence. Antonym. Opposite meaning of word is called an antonym. Synonym. Same meaning of word is called a synonym. Thank you. ओके वेरी गुड, सुनाइए। Good morning, all of you. My name is Pransu Kumari of class 9 in Intelligent Question. What is noun? Naming words are called noun. What is pronoun? Alternative of noun is called pronoun. What is verb? Action words are called verb. Adjective. Describing words are called adjective. Sentence. A group of words that makes a complete sense is called sentence. Antonym. Opposite meaning words are called antonym. Synonym. Same meaning words is called synonym. ओके वेरी गुड, क्लैपिंग कीजिए। Name is Mariam Parveen. Noun. Naming word is called a noun. Pronoun. The alternative noun is called a pronoun. Verb. Action word is called a verb. Adjective. Describing word is called a adjective. Sentence. An adjective. An adjective. Sentence. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. Antonym. Opposite meaning is called an antonym. Synonym. Same meaning is called a synonym. Thank you. ठीक है, बहुत अच्छा, क्लैपिंग कीजिए सब लोग। Rani Parveen. What is noun? Naming word is called a noun. Pronoun. The alternative of noun is called a pronoun. Verb. Action word is called a verb. Describing word is called a adjective. An adjective. Sentence. A group of words that makes a complete sentence is called a sentence. Antonym. Opposite word is called a antonym. Synonym. Same meaning is called a synonym. ओके वेरी गुड। Morning, all of you. My name is Kainat Khatun. Noun. Naming word is called noun. Pronoun. Alternative of noun is called pronoun. Verb. Action word is called verb. Objective. Describing word is called objective. Synonym. Same meaning of word is called synonym. Antonym. Opposite meaning is called antonym. Thank you. ठीक, ओके वेरी गुड। My name is Mohammad Dilshad. What is noun? Naming word is called noun. What is pronoun? Alternative word is called pronoun. अल्टरनेटिव ऑफ नाउन। अल्टरनेटिव ऑफ नाउन। What is verb? Action word is called verb. Objective. Describing word is called objective. एडजेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। Sentence. A group of that make a complete sense is called sentence. Synonym. Same meaning is called synonym. Antonym. Opposite meaning is called antonym. Thank you. चलो ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा थोड़ा गलती हुआ है, जितना सब किया है। Noun. Naming word is called a noun. What noun? Alternative of noun is called a pronoun.
verb. Action word is called a verb. Adjective. Describing word is called a adjective. Sentence, a group of words that makes a complete sense is called a sentence. Antonym. Opposite meaning is called a antonym. Synonym. Same meaning is called synonym. चलिए ठीक है, लेकिन जहाँ पे एडजेक्टिव आ रहा है तो एन एडजेक्टिव, एंटोनिम आ रहा है तो एन एंटोनिम, वॉवेल वाले के पहले एन लगाना है, सब में ए नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट। Noun. Naming word is called a noun. Pronoun. Alternative of noun is called a noun. Verb. Action is called a verb. Action word is called a verb. Adjective. Describing. नहीं आता है, कैसे काम चलेगा? My name is Safa Khatun. Noun. Naming word is called noun. Pronoun. Alternative of noun is called pronoun. Verb. Action word is called verb. Adjective. Describing word is called an adjective. Sentence. A group of words that make a complete sentence is called sentence. Antonym. Opposite meaning is called an antonym. Synonym. Same meaning is called synonym. Thank you. ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, My name is Akshat Kumar. What is noun? Naming word is called a noun. What is pronoun? Alternative word is called a pronoun. Verb. Action word is called a verb. Adjective and is describing word is called a adjective verb. Antonym. Opposite meaning is called a antonym. Synonym. Same meaning is called a synonym. Thank you. ठीक है, आप लोग देखिएगा वीडियो जरूर कि क्या क्या गलती किए हैं, तब आपको पता चलेगा। Noun. Naming word is called noun. Pronoun. Alternative of noun is called pronoun. Verb. Action word is called verb. Describing word is called adjective. Sentence. A group of words that make a complete sense is called sentence. Antonym. Opposite meaning is called an antonym. Synonym. Same meaning is called synonym. Thank you. ओके, वेरी गुड। कितना टाइम लगा? Noun. Naming word is called a noun. Pronoun. Alternative noun is called a pronoun. Verb. Action word is called a verb. Objective. Describing word is called a adjective. Sentence. A group of word makes a complete sense is called a sentence. Antonyms. Opposite meaning is called antonyms. Antonyms. Same meaning is called synonym. थैंक यू, शुक्रिया। तुम तो अपना वर्ड अपने आविष्कार कर लेता है जी, सेंटोनियम कुछ बोल के। चलो ठीक है, गलती करके ही हम सीखेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने गलती बोला है, लेकिन ये गलती ही आपका सबक बनेगा कल। My name is Aksana. Noun. A naming word is called a noun. Pronoun. Alternative of noun is pronoun. Verb. Action word is called a verb. Adjective. Describing word is adjective. Sentence. A group of words that makes a sense, complete sense is called a sentence. Antonym. Opposite word is called a antonym. Synonym. Same word is called a synonym. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। My name is Kajal Kumari. Now, naming word is called a noun. A noun. Alternative of is called a noun. Verb.
Action word is called a pronoun. Verb. Noun. Naming what is called a noun. Pronoun. Adjective. The native of is called a pronoun. Adjective. Native of is called a pronoun. Called and सही है. synonym. Synonyms. Same Some meaning is meaning. called a. Some meaning is called Same meaning is the synonym. Option what is